Nagaland's political scene saw a major shift as the Naga People's Front officially joined the ruling People's Democratic Alliance led by Chief Minister Nltv. The 27th MDFA Trophy 2025 kick-off on October 14 at 1 p.m. at the Imkong Marine Sports Complex in Mokokchung. H. Sedong Sangdam, MLA and Advisor for Information Technology and Communication, praised the event as an inaugural case. Azim Raffles was the chief case at the annual sports meet of Discipleship Bible College in Dimapur, Nagaland. Azim Raffles conducted a major tree plantation drive across Mallory and Peck districts of Nagaland under the theme Ek Bait Maginam. A coalition of Karbi organizations led by the Karbi Students Association and including groups like the Joint Action Committee for Autonomous State and Karbi Farm Association submitted a joint memorandum to Dr. Duliram. Hello viewers, this is Marunigitan and you're watching English Primetime. Now the news in detail. Nagaland's political scene saw a major shift as the Naga People's Front officially joined the ruling People's Democratic Alliance led by Chief Minister Nltv. This move, formalized by an ordinance on October 14, signals a possible upcoming merger between NBF and the Nationalist Democratic Progressive Party, hinting at a unified regional front. A high-level PTA meeting was convened in Kohima to discuss collaboration details and political integration. Key leaders from PTA, BJP, NTBB, and NBF attended, reflecting the importance of this realignment. Chief Minister also sought support from former NBF President Shorozili Lezetso, underscoring the political significance. This alliance strengthens PTA's position and could reshape Nagaland's political balance if the merger proceeds. The 27th MDFA Trophy 2025 kick-off on October 14 at 1 p.m. at Imkong Marine Sports Complex in Mokokchung. H. Sedong Sangdam, MLA and Advisor for Information Technology and Communication, praised the event as the inaugural case. In his address, Sangdam highlighted the importance of football in shaping character and discipline among youth. The majors scheduled for October 15 are the Longcham FC versus Super Seniors FC and Thunderbolt FC versus NU Lumami. Program to the gender. Senior SP Mokokchung District Football Association and its team. And not forgetting Srimadi Shirula Imchen, woman pastor Mokokchung Town Baptist Arugo. I guess it should be that way. And all the dignitaries, football enthusiasts, ladies and gentlemen, I thank the organizing committee of this tournament for according me the privilege, the honor to be present here as the special guest for inaugurating this MTFF Football Tournament 2025. To be very honest, actually I am here because I just wanted to share some of my thoughts with the upcoming youth of our state. But like I've been discussing with some of my friends here that our people, they don't like to listen to advices, but they'd rather love to watch. So I feel when anyone blows, when a referee blows a whistle, that time maybe they'll get her. You see, today we are all gathered here, not only to compete with one another, with our opponent teams, but we should always keep in mind that we are here to celebrate the spirit of sportsmanship
teamwork, and the incredible talents that our youths, Naga youths of Nagaland has on display. So I wanted people to watch how our youths play and the talents that our youths have been gifted with. As I was observing the players around, I see the spirit of friendly competition and sportsmanship, which is really inspiring. We should be very thankful to our Creator, our gracious God, that we Nagas have been gifted, naturally gifted, with various potentials in various sports, fields of sports. So we should be very thankful. But what I want to suggest the youth of our state is that we should know how to refine and polish the gift that God has gifted us with. Learn to together. Assam Rifles conducted a major tree plantation drive across Mallory and Pek districts of Nagaland under the theme Ek Paid Maginam. The drive took place in Pek, Avangku, New Dimahati, Zepu, Mallory and Akin with strong support from local residents. The initiative promoted environmental awareness and sustainable practices, reinforcing Assam Rifles' commitment to community welfare and conservation. Assam Rifles was the chief case at the annual sports meet of Discipleship Bible College in Dimapur, Nagaland. The event began with an invocation by Dr. Bonjan, followed by welcomatories from Principal Dr. Bentang and a soulful benediction of Vante Mataram by students. The commander of Dimapur Sector Assam Rifles addressed the gathering, stressing the role of sports in building discipline, resilience, teamwork and leadership. The event reflected Assam Rifles' continued dedication to community engagement and youth empowerment in the region. Based on a secret tip-off, Vishalkar police led by Sub-Inspector Prasanjit Debnath conducted a successful anti-drug operation in Kukul Nakar Road, Heights, Sibajala District, Tripura, seizing a large quantity of illegal British liquor. Drug smuggler Nagendra Debnath was arrested on the spot. The recovered liquor's market value is estimated between Rs 50,000 and 60,000. Local villagers have urged for stronger police action to keep Vishalkar drug-free. আজকে আমরা রাস্তা সংলগ্ন এলাকায় ন্যাশনাল হাইওয়ে 8 সংলগ্ন এলাকায় একটা টিফিনের দোকানে হানা দিই গোপন খবরের ভিত্তিতে। তারপর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মানে মদগুলি আমরা পাই একের ফরেন দিকটা। বাজার মূল্য কত হবে? এটা বাজার মূল্য অ্যাপ্রক্স 45 to 50,000 রুপিস হবে। ভালো ব্র্যান্ডেরও আছে এর মধ্যে কিছু। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, মানে আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, মাদকদ্রব্য পানের ফলে বিভিন্ন মানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অনেক ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনগুলি মানে ডেভাস্টেটিং সিচুয়েশন দাঁড়িয়ে যায়, যার ফলে আমাদের পুলিশ কর্মী বা অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মীদের অনেক বিপদ হয় এবং সাধারণ মানুষেরও অনেক বিপদ হয়। তো এই জন্য আমি স্পেশালি মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাব এবং আমার প্রতিনিয়ত এগুলি চালাচ্ছি এবং আমরা সাফল্য পাচ্ছি তাতে। এবং আমি যতদিন থাকি বা যে কোনো জায়গাতে থাকি এগুলি আমার পক্ষ থেকে অভিযান চলবে। আর মানে যাতে সমাজের বুদ্ধিজীবী লোক থেকে ধরে সাধারণ লোক ভালোভাবে রাস্তাঘাটে চলতে পারে এবং ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিসগুলি। K. Megachandra Singh, president of the Manipur Pradesh Congress Committee, condemned the demolition of the historic Manipur Rajpar in Shillong. He criticized the Planning and Development Authority for the act, calling it unjustified and insensitive to Manipuri cultural heritage. Singh demanded government accountability and urgent measures to protect other heritage sites important to the Manipuri community. People today, the 15th October 2025, has to be a symbolic day for the fact that the Rajbari building, Brett Hills in Shillong, has been
demolished, and it has become a kind of very. It has created a kind of war, outcry by the people of Manipur. So why this Rajbari is so important? What is this Rajbari building? And what do you say about the demolitions of these buildings? The historic Manipur Rajbari at Shillong, situated at Red Lane, is a very historic place of Manipur. Particularly this Rajbari is the place where the merger agreement signed between the Dominion of India and the Manipur. And today is the day that the Manipur was merged officially to the Dominion of India. It has been completed 76 years. And again, from our side, this demolition of historic Manipuri Rajbari is highly condemned, is a very highly condemnable from our side, and our Manipur Pradesh Congress Committee is not happy with that demolition of the Manipur Rajbari there at Shillong. And it is a living chapter of the proud history of Manipur. And BJP, under this double engine government, it has destroyed, demolished recently, and it is in fact, it is breaking the heritage, and also it's an eraser of the history of Manipur. The people of Manipur are not happy, and all sections of the people are very painful with this demolition of this Manipur Rajbari there in Shillong, Red Lane. And it's very unfortunate that the PDA, Planning and Development Authority, Government of Manipur, under the instruction of the former Chief Minister. Swift police action in East Khasi Hills, Meghalaya prevented a lynching after villagers mistook a mentally challenged man, Arnik Star Brighton Tang, for a witch. The mob detained him amid suspicion, but police and village elders intervened, rescuing him from the angry crowd. Retired Tiang, who sustained minor injuries, is now receiving treatment. Authorities have registered a case and warned against acting on rumors. Heavy rains have worsened the condition of the Aizawl-Silchar National Highway in Mizoram, leaving 717 vehicles stranded, including 401 goods trucks and 216 empty ones. The Sarang-Kangpyu Stretch and roads leading to Mami Town are severely damaged. Despite repair appeals, no action was taken, prompting threats of strike from transport associations starting October 16 and 19. Authorities have begun repair work, but urgent government intervention is needed to ensure safe transport. Tripura Chief Minister Manik Saha met Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on October 15 to present key proposals aimed at boosting the state's development and supporting the vision of the Viksit Bharat. Saha requested the inclusion of the Buryan community under the National Food Security Act and sought increased weight allocation for Tripura's public distribution system. He also discussed infrastructure projects like double laning, the state railway track, introducing a Vande Bharat Express between Agartala and Guwahati, and raising the ceiling for externally aided projects. Other proposals included establishing an Agarport Research Center, adding 15 Ekleva model residential schools, and declaring Unagudi a sustainable development heritage site. Saha emphasized these initiatives are vital for Tripura's growth and aligned with the broader national development goals. A coalition of Karbi organizations led by the Karbi Students Association, Central Executive Committee, and including groups like the Joint Action Committee for Autonomous State and Karbi Farmer Association, submitted a joint memorandum to Dr. Tuliram Rongchang's Chief Executive Member of the Karbi Anglong Autonomous Council. They urged the KAC, Assam government, and other stakeholders to restore peace and security in the region.
A gruesome murder has rocked the Barawa area of Tezpur, where a young man named Abed Ali allegedly hit a woman Muni to death with an axe, striking her neck multiple times in a savage assault. Locals were left shocked by the sheer brutality of the attack. Police have arrested the accused and initiated a detailed investigation into the incident. Viewers, now we'll take a short break. Welcome back, viewers. You are watching English Primetime. A forest guard Ajay Tumang allegedly fired his service rifle at Bahar Line Forest Camp, Golaghat, injuring two locals. One was shot in the leg and the other hurt badly. Both are hospitalized, and the incident raised local safety concerns. মানে যেটো পাহাৰলাইন কেম্প আছে তাতে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপোনালোকৰ বনকৰ্মীয়ে দুজন লোকক গুলিয়াইছে আৰু আহত কৰিছে বুলি এটা অভিযোগ উঠিছে কি ক'ব মতে আমি কেম্পৰ ষ্টাফ এজনে মোক খবৰ দিয়ে যে ইয়াতে এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হৈছে গতিকে খবৰ দিয়াৰ লগে লগে মই ষ্টাফ লৈ পিনে ইয়াতে উপস্থিত হওঁ লগতে জুৰিয়া দলং বিদ্যুৎ ষ্টাফো উপস্থিত হয় আহি পিনে ইয়াতে ঘটনাখিনি সম্পূৰ্ণকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও ইয়াতে এটা মাটিত এটা চিন দেখা পোৱা গৈছে ৰাইজে কৈছে যে এইটো তেওঁ মাটিত ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছে এইটো তেওঁ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে কৰা বুলি মোৰ সন্দেহ হৈছে মানে তেওঁৰ গাঁৱৰ মানুহৰ লগত কিবা মানে হয়তো কাজিয়া হৈছিলে মই সম্পূৰ্ণ ঘটনাখিনি এতিয়াও জানিব পৰা নাই তদন্তৰ পিছত গোটেইখিনি কথা ক'ব পৰা যাব তো তেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ তেওঁ হয়তো আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে মাটিত গুলি মাৰি পিনে তেওঁ বৰ্তমান আঁতৰি গৈছে কি নাম তেখেতৰ বনকৰ্মীজনৰ তেখেতৰ নাম অজয় টিমু তেখেতে ক'ত কাম কৰিছিলে তেখেতে পাহাৰলাইন কেম্পতে পষ্টিং আছে এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ দুজন ব্যক্তি আহত হৈ কাষৰ মানুহৰ লগত পৰি আছে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে অভিযোগ উঠিছে বনকৰ্মীয়ে গুলিয়াইছে বুলি এই মানুহখিনিয়ে ইতিমধ্যে আমাক মানে প্ৰশ্ন কৰি আছে গতিকে আমি বিশেষ তদন্ত আগবঢ়াব পৰা নাই মানুহখিনি আঁতৰি গ'লে আমি আছোঁ পুলিচকো খবৰ দিছোঁ লোকেল থানাত তেওঁলোকো আহিব আহি পিনে তদন্ত আগবঢ়াব মই দেখা নাই এতিয়াও কোনোবা মানুহ আহত হৈছে নে A tragic bus fire on the Jaisalmer, Jodhpur highway claimed 20 lives and left 16 critically injured. The blaze expected to be caused by a short circuit engulfed the bus shortly after departure. Rescue efforts involve locals, police, fire services and the army. Authorities are working to identify victims and provide medical aid. आज ये जो दुर्घटना हुई है उसके जो 16 घायल है बड़ लोग हैं उनको यहाँ पर एमजीएच की बर्न यूनिट के अंदर लाया जाएगा एंड यहाँ पर उनकी पूरी तरह से जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो देने की पूरी तैयारी यहाँ पर है एंड जो मरीज हैं उनके इलाज के अंदर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी सर किस तरह की व्यवस्था है क्या है सर कितने मरीज आ चुके हैं अभी तक 2 पेशेंट्स आए हैं इनके अलावा 14 और पेशेंट्स अभी ऑन द वे हैं वो भी थोड़ी देर में आएंगे 19 तो अंदर ही बस के अंदर ही इनकी काल कलवित मृत्यु हुई और एक जोधपुर जाते समय रास्ते में तो ये तो बड़ा दुखद और हृदय विदारक है पूरा प्रदेश और पूरा देश व्यथित है इसको लेकर के सीएम साहब बहुत व्यथित थे और तुरंत ही 1.5 घंटे में और शायद संभवतः 1.5 या 2 घंटे में सीएम साहब सब काम छोड़ करके तुरंत यहाँ पहुँच गए यहाँ काफ़ी देर तक भावभीत रहे और अब यहाँ से शीघ्र ही वो जोधपुर जो भर्ती है उनके कुछ हम पहुँच गए होंगे मेरा घर है पास में वहाँ पे था एकदम आवाज़ आई धमाके की तरह आवाज़ आते ही मैं बाहर निकल के देखा तो एकदम धुआं धोर हो रही फिर मैंने 108 पे फ़ोन लगाया 108 पे फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने पूछा कहाँ से है वो मैं क्या जैसलमेर से हूँ जैसलमेर तहसील और 12वीं जी के पास बस में आग लगी है आप थोड़ा तो एम्बुलेंस व्यवस्था करें मैं एम्बुलेंस भी करो और जो भी है व्यवस्था करो हम यहाँ आग लग बस में फिर आप लोग थे बचाव किया हाँ हमारे 30 लोग थे यहाँ दारू के गोदाम में और हमारे
Police in Tripura Kowai district busted a major drug trafficking operation after seizing 2 vehicles falsely marked with praise and Nltv telecom, recovering 580 kg of illegal tried cannabis, 361 kg in one and 219 kg in the other. 2 traffickers were arrested and fake praise and telecom ID cards were found in the vehicles. Authorities are probing the gang's financial links and possible connections beyond Tripura. PS ने बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ पे सनेस है, सर्विस ओसी है, यहाँ के बड़े बाबू, इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करके, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन करके, और मतलब काइंड ऑफ ये हाईवे मैन ऑफ त्रिपुरा पुलिस बोल सकते हैं। इन्होंने पूरा हाईवे, नेशनल हाईवे को एकदम, इनका एक पूरा टैक्टिक्स है, इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी है। उसका परिणाम है कि आज का जो रिजल्ट है वो है टोटल 580 kg ऑफ गांजा, सस्पेक्टेड टू बी गांजा, ड्राई गांजा मिला है, जिसकी मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के अराउंड होगा। और ये 2 व्हीकल से मिला है। ये थोड़ा चेजिंग करना पड़ा गाड़ी को, और व्हीकल इंटरसेप्शन से हमने एक टाटा सफारी गाड़ी है और एक दूसरी गाड़ी है, इनको सीज किया। एक्यूज्ड भी हमें मिला है। अकॉर्डिंगली हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसका। एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल कि आप लास्ट 1 महीने का रिकॉर्ड भी देखेंगे, इससे पहले भी तो मुंगिया कामी PS में बहुत बार कंटिन्यूसली दे आर परफॉर्मिंग, और एक काइंड ऑफ मेजर क्रैकडाउन हो रहा है ड्रग्स पे। जैसे हमें DGP सर ने इंस्ट्रक्ट किया है और SP सर की लीडरशिप में ये सब हमने, ये हमारा रिजल्ट है, अचीवमेंट है, एंड वी आर कंटिन्यूइंग टू डू सो। नहीं, अलग अलग गाड़ी है, अलग अलग जगह है दोनों। तो ये मतलब एक जगह नहीं है, इट इज़ 2 प्लेसेस। ये महारानीपुर है और दूसरा सनाई, चंपाई। हाँ, ये थोड़ा ये मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजकल एकदम नए नए तरीके यूज करने लगे हैं। हमें नंबर प्लेट्स मिली है गाड़ी के अंदर, डिफरेंट नंबर है, एक कुछ आसाम के नंबर है, कुछ त्रिपुरा के नंबर है, तो उसमें चेंज करते होंगे प्रोबेबली। एक्चुअल जो उसका गाड़ी का नंबर है, अलॉटेड नंबर है, उसका एक सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा, इसके अलावा Tripura has updated its building rules to reduce earthquake risks at a state licensed seismic zone 5, the highest risk category in India. Dr. Sarat Kumar Das, State Project Officer of Disaster Management, said the amendments ensure new infrastructure follows earthquake resistant standards, with training provided to technicians, engineers and artisans. To mark the International Day for Disaster Risk Reduction, a mock earthquake drill was conducted at the Tripura Secretariat. Is highly vulnerable to earthquakes. For the earthquake risk reduction, there are so many activities are also being taken up, and 2-3 things, major activities recently are taken. One is that the building rules has been modified and amended. Number 2, many engineers, technicians, and also artisans are also being trained in different levels. PWD, our technical institutions like urban development department, rural development department, panchayat department, they are taking measures how to build disaster resilient infrastructure. A major fire broke out in Bihar Barikohati, cutting several houses mostly belonging to construction workers. The blaze caused extensive property damage, but no casualties have been reported so far. Firefighters responded quickly and managed to control the flames. Authorities have launched an investigation to ascertain the cause of the fire. লেবার কলোনি কিমান মান ঘৰ আছিল? বহুত আছে, বহুত পুৰা লাইনে আছে। চিলিণ্ডাৰো আছে নেকি? কিবা ইহঁতৰ মানে খানা চানা বনাই না তাত সব জ্বলি গৈছে। Maharashtra CM Devendra Fadnavis on Wednesday said the surrender of senior Naxalite Marjola Vagnopal Rao alias Pudabi, along with 60 cadres in cultural rally, marks the beginning of the end of the Naxal movement in the state. Babati, carrying a Ruby 6 core bounty and considered a top-moist strategist, surrendered with 54 weapons, including AK-47As and Insas rifles. He assured full rehabilitation for the surrendered cadres and said the region is now seeing rapid development, with Ruby's 3 lakh core investment turning Gadchiroli into a steel hub. देश में माओवाद के खिलाफ जो एक लड़ाई शुरू हुई थी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह इनके नेतृत्व में मार्च 2026 तक इस देश में
माओवाद को समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया था उसमें महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी पहल की है। 2014 से लगातार हम लोग एक लंबी लड़ाई माओवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक और गांव-गांव तक विकास पहुंचाकर लोगों में विश्वास जगाने का काम हमने किया है और साथ में हमारे पुलिस दल ने विशेष रूप से हमारी C60 ये जो यहाँ की बटालियन है हमारी पुलिस की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर डीप फॉरेस्ट में जाकर, सुदूर जंगलों में जाकर, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में जाकर माओवादियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध करके उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको अरेस्ट करना और उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना, ऐसी एक लड़ाई चलाई और जिसके चलते बड़े पैमाने पर माओवादियों के ध्यान में आया कि जो स्वप्न लेकर वो माओवाद में शामिल हुए थे वो स्वप्न समाप्त हो चुका है और अब भारत के संविधान ने जो व्यवस्था निर्माण की है उस व्यवस्था में वापस आना यही उनकी भलाई के लिए सिद्ध होगा और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। 1 जनवरी को मैं यहां पर था और एक बड़े केडर तारक का इन्होंने आत्मसमर्पण किया और मैं ऐसा मानता हूं कि वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ और आज जो सोनू उर्फ भूपति इन्होंने आत्मसमर्पण किया है उनके साथ 60 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। A heart-wrenching incident has shaken Charinga area in Kolaka district, where a woman allegedly tied her 3-year-old son to her chest and jumped into a pond, ending both their lives. Locals say the woman, driven by unbearable harassment from her mother-in-law, took the drastic step. The lifeless bodies of the mother and child were later recovered from the pond by nearby residents. Both Kolaka and Dikil police, along with the magistrate, reached the spot and sent the bodies for post-mortem examination. এতিয়া মই ক'বলৈ গ'লে মই ৰাতিপুৱা কামলৈ ওলাই গৈছিলোঁ। মা আৰু আমাৰ পুতেকৰ মাজত খুটখাট কাজিয়া লাগিছিলে। ইমান ডাঙৰ কাজিয়া হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱা তেনেকৈ অকণমান লাগিছিলে, মুখে মুখে তৰ্ক। মই 7:30 গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত ইমানখিনি অৱস্থা হৈ যাব বুলি মই নাই ভবা। মই কামত জইন কৰিলোগৈ, তাৰপিছত খবৰ দিছে বোলে এনেকুৱা হ'ল, চুইচাইড কৰিলে। আৰু মোৰ বিশেষ কৰিবলগীয়া নাই। মানে প্ৰায়ে লাগি থাকে নি? প্ৰায় মানে মাজে মাজে লাগে, কিন্তু ইমান ডাঙৰ হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। আপুনি কামৰ পৰা খবৰ পাই পেলাই? কামৰ পৰা খবৰ পাই কি হয়? এতিয়া মই ক'বলৈ গ'লে মই ৰাতিপুৱা কামলৈ ওলাই গৈছিলোঁ। মা আৰু আমাৰ পুতেকৰ মাজত খুটখাট কাজিয়া লাগিছিলে। ইমান ডাঙৰ কাজিয়া হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱা তেনেকৈ অকণমান লাগিছিলে, মুখে মুখে তৰ্ক। মই 7:30 গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত ইমানখিনি অৱস্থা হৈ যাব বুলি মই নাই ভবা। মই কামত জইন কৰিলোগৈ, তাৰপিছত খবৰ দিছে বোলে এনেকুৱা হ'ল, চুইচাইড কৰিলে। কি হ'ল মানে তাই আজি কেইদিনমানৰ পৰা মোক কৈছিলে ঘৰত যে এনেকুৱা এটা কাজিয়া হৈছে, মানে সাধাৰণ এটা বাল্টিঙৰ পৰা লাগিলে। বাল্টিংটোত মানে শাহুৱেকে কিবা পেটিকোট মেখেলা ভৰাইছিলে, সেই বাল্টিংটো মানে খোৱা পানী ব্যৱহাৰ কৰে। সেই কথাটোকে কওঁতে মানে শাহুৱেকে ওলোটাই পোলোটাকে বেলেগ হৈ ভাত খাবলৈ ল'লে আৰু বেলেগ হৈ ভাত খোৱাৰ লগে লগে তাই সেইটো মানে এটা হেৰি বুলি ভাবিলে, বেয়া বিষয় বুলি ভাবিলে। সেই কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁতে তাই এইটো পথ বাছি ল'বলগীয়া হ'ল। আৰু তাই মই এটা কথাই কওঁ, বহুত ভাল ছোৱালী আছিলে।